Afternoon, everyone. So today we are going to discuss regarding the statistical packages and application we are using in the to calculate the formula of the following data. So there are some of the packages and application is mentioned here. Mainly it is statistical packages and application mainly used for the research purposes and application of the software in computer are in entering, organization, analysis and presentation of data. So mainly we are using the statistical packages and application for the research purpose, and we are applying the software in the computer as entering the data, organization of the table, analysis of the data, representation of the data in form of statistical packages. So some of these software are statistical package for social sciences, MS Excel, EPI Info, Stata, Minitab, etc. So these are the some of the statistical packages we are using for data analysis. So these software save the time by making calculation faster and accurate. It's very effective software which are making the calculation as faster and saving the time and should be accurate in form. So amongst all these, SPSS is commonly used to analyze the data. We are using the some of the SPSS. Now only commonly we are using SPSS everywhere to develop and to analysis the data and to get the result of the following data. So it is very effective tool and effective package, that is SPSS, is commonly used to analyze the data. So application of the SPSS for descriptive statistics will be discussed. One can also go for inferential statistics and construction of graphs, charts using this software. Rest of the software will also be introduced. So mainly in the inferential statistics and construction of the graph and charts, we are using this type of software of the SPSS, and rest of the software will also be introduced as in form of to data analysis. So what do you mean by the SPSS? SPSS is the stand for statistical package for social sciences. Is the SPSS stand for statistical package for social sciences? There are some of the features of the SPSS are data documentation, data management, data presentation, and data analysis. These are the four features of the SPSS. Data documentation, we are doing the documentation of the data, we are doing the management of the data, we are doing the presentation of the data, we are doing the analysis of the data. These all features we are using in the SPSS. So SPSS can take data from any type of file and use them to generate tabulated reports, charts, plots of distribution and trends, descriptive statistics, and complex statistical analysis. So here, SPSS can take the data from any type of file. We can use any file for SPSS so that we can, and we also can generate some of the tabulated reports also, charts also, and some of the distributed plots also, and trends. There should be trends, and descriptive statistics and complex statistical analysis can be done by the SPSS. So data editor in the SPSS offer a whole workbook like option to enter and edit the data. So one can create new data files or so one can create new data files, just like modify already existing data. Whatever data we should have, we should be modify the data, and we should develop the new data, and we can also create the new data for the SPSS. And how we are using the SPSS. So after the installation of the SPSS on the computer, it can be started from the start menu by clicking start का आपने बटन दबाया, then goes to the program में चली जाइए. उसके बाद प्रोग्राम में जाने के बाद पहले आपने विंडो को इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर से. कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद हम उसका जो मेन्यू है उसको क्लिक करेंगे,
स्टार्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम पे पहुंचेंगे। प्रोग्राम के बाद SPSS फॉर द विंडो, SPSS फॉर द विंडो ओपन करेंगे, जिसमें दो प्रकार की सीट्स होती हैं, एक डेटा एडिटर होता है, एक SPSS व्यूअर होता है। सो डेटा एडिटर का काम है आपका डेटा एंटर्ड एंड एनालिस, सो डेटा को एंटर करना और उसको एनालाइज करना। SPSS व्यूअर का मतलब होता है कि आउटपुट इज ऑब्टेन, SPSS व्यूअर जो है वो आउटपुट को ऑब्टेन करता है। सो डेटा एडिटर हैज टू पेजेस, इसके दो पेज होते हैं डेटा एडिटर के। नंबर 1 पेज है आपका वेरिएबल व्यू एंड दूसरा है आपका डेटा व्यू। सो एंटरिंग द डेटा इन द SPSS like variable name, its type, width, etc. These entered into the variable view. जब हम क्या करते हैं कि वेरिएबल व्यू जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी डेटा को एंटर करते हैं स्पेसेस के अंदर, तो वेरिएबल नेम आता है, टाइप आता है, उसकी विड्थ आती है, उसके बाद उसको वेरिएबल व्यू के अंदर हम एंटर करते हैं। तो उसके एंटर करने के बाद डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द डाटा व्यू, डाटा व्यू के अंदर हम उसको एंटर कर देते हैं। So variable name in the variable view are headings of the row and data view sheet. So variable name in the variable view के अंदर होता है और headings जो होती है और रो के अंदर इन डाटा व्यू के सीट के अंदर ये हम डेवलप करते हैं। So opening and saving the file, एक बार हो गया एनालिसिस हो गया, उसके बाद ओपन कर देते हैं, सेव फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल्स आर ओपन एंड सेव्ड इन द SPSS फ्रॉम द फाइल मेन्यू इन ए सिमिलर मैनर लाइक अदर सॉफ्टवेयर की तरह। फॉर सेविंग ए फाइल, फाइल को सेव कर देते हैं, एंटर द नेम SPV एक्सटेंशन एंड उसके बाद ओपनिंग ए फाइल, सेव करने के बाद उसको ओपन करते हैं, फाइल के बाद फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं और फाइल को सेलेक्ट कर देते हैं। देन ऑब्टेनिंग descriptive statistics of the data. Obtaining descriptive statistics of the data, if we want to calculate mean, median, standard deviation, etc. for the data, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, descriptive statistical of the data को obtain करते हैं if we want to calculate the mean, median, and standard deviation and from the analyze the mean. यहाँ एनालाइज द मीनू के बाद हम क्लिक एनालाइज को क्लिक करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को का पेज को खुल जाता है, उसको क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को एंटर करते हैं। देन ए डायलॉग बॉक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विल ओपन, एक डायलॉग बॉक्स होता है फ्रीक्वेंसीज का, वो ओपन हो जाता है। सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट वेरिएबल टू द राइट साइड, राइट एंड क्लिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल ओपन हो जाता है। अगेन डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद मीन मीडियन मोड को हम टिक करते हैं, क्या हमें जो भी निकालना होता है उसको टिक करना पड़ता है। देन क्लिक द कंटिन्यू एंड ओके एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑन आउटपुट शीट। सो दिस इज द SPSS. It's very easy to use the SPSS in the computer. So very effective and very time consuming software. Next we'll see the Microsoft Excel. Microsoft Excel nowadays we are using commonly in everywhere. So it is very important part of the Microsoft Office. It is a grid of rectangular boxes called cells. Rectangular boxes होते हैं, उनको हम cells कहते हैं. These cells are arranged in the horizontal rows and vertical. दो प्रकार से ये arrange होती हैं cells. एक रोज के अंदर होती है, एक वर्टिकल कॉलम के अंदर होती है। ये हमें क्या करती हैं कि हमें हेल्पफुल होती हैं टू ऑर्गेनाइज द न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल डेटा इन द शीट के अंदर। सो डेटा शीट्स इन द एक्सेल कैन बी एनालाइज बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करने के बाद डेटा शीट एक्सेल की जो है उसको एनालिसिस करते हैं। इट मेक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट इजियर बाय यूज ऑफ illustration like charts and graphs. It has a programming aspect, visual basic of the application, allowing user to employ a wide variety of numerical methods. कोई भी हमें चाहे ग्राफ बनाना है, चाहे टेबल बनाना है, चाहे हमें उसका डायग्राम बनाना है, वी कैन डू बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल in very easy method also, and we can also put the sum of the numerical values so that it can be shown on the diagram and graphs. So example for solving differential equation of the mathematical physics and then reporting result back to the spreadsheet जो होती है उसके ऊपर जो रिजल्ट होता है वो डेवलप हो जाता है। यूज ऑफ द एक्सेल बाय द
researcher is not very common as it involves the use of formula application by user, thereby increasing chances of error. इसमें बहुत ज़्यादा error की chances बहुत ज़्यादा रहते हैं. ये effective tool नहीं है, effective नहीं है जिसमें कि हमारा data एक प्रकार से properly arrange हो और proper result हमें show करे. So next, move on the stata. Stata is syllabic abbreviation of the words statistics and data. Syllabic abbreviation होता है words का statistics and data के अंदर. It's a statistical software package created in the 1985 by the Stata Corp. Researchers from the field like economics, sociology, political science, biomedicine, biostatistics, and epidemiology use this software. Stata packages is very good for the applied research के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये effective होता है. It also has been advanced tool for the managing specialized data such as survival duration data, time series data, panel, longitudinal data, categorical data, multiple imputation data, and survey data. It's very effective tool for managing this type of data, in particular form of data in the research. Next, the Minitab. Minitab is a statistics package developed by the Pennsylvania State University by the researcher Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Ryan Jr., and Brian L. Joyner in 1972. It began as a light version of the OmniTab, जिसको OmniTab के नाम से भी जाना जाता है. OmniTab was published in 1986. Then Minitab is used for the data management and different statistical analysis. Minitab का data management और different statistical analysis के लिए यूज में लाया जाता है. Result can be displayed in the form of graph. हम कोई भी इसका डेटा को एनालिसिस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ग्राफ में डिस्प्ले होता है, जिसको ग्राफ को हम एडिट भी कर सकते हैं, अपडेटेड कर सकते हैं, एक्सपोर्टेड भी कर सकते हैं. मिनीटैब कैन बी परफॉर्म वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जैसे कि उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, नॉर्मेलिटी टेस्टिंग करते हैं. इस तरह की टेस्टिंग हम मिनीटैब से कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल चार्ट्स. ये कंट्रोल चार्ट्स को प्रोवाइड कराता है, क्वालिटी टूल्स को डेवलप करता है, रिलायबिलिटी जो होती है किसी भी डेटा की उसको निकालने में हेल्पफुल होता है मिनीटैब. एपीआई इन्फो. एपीआई इन्फो के अंदर इट डेवलप ए क्वेश्चनियर customized data entry process, quickly enter data into the questionnaire and then analyze data. एक प्रकार से क्वेश्चनर के लिए एक प्रकार से डेवलप करता है, कस्टमाइज डेटा को एंट्री प्रोसेस के अंदर कस्टमाइज करता है और उसके बाद ये डेटा को एंटर करता है क्वेश्चनर एंड देन एनालाइज द डेटा. हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. मेनली यूज्ड बाय द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड रिसर्चर्स. It is used for the outbreak investigation, developing disease surveillance, disease epidemiology, and public health analytics. So these are using that EPI info. So next, move on the SAS. SAS means Statistical Analysis System. www.asa.com. It is very comprehensive software which is developed by the North Carolina State University. The system contains a very large variety of statistical methods. Is a software of the choice of many major business including entire pharmaceutical industries के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. So this is the SAS. So now is a completing whole topic of the biostatistics. Now your unit is also completed here. So in the next class we'll discuss something related to this unit, like important questionnaires. We'll see in the next class. Thank you everyone.